Good evening, everyone. Because of my mistake, we are meeting something late, 10 minutes. Sorry for that. And today, we welcome our today's speaker, Kirti Vijaya Madam, who is former assistant professor and certified career coach. She is also invited as a keynote speaker and she is also author of books. She is from Gaya, Bihar. She is not new for the dais. Before that, she also invited and delivered talk. So it's late now. So I welcome you, ma'am, from my participants and all organizing team. And I request you, you can start your speech on English language and acquired skill for life. Thank you. Thank you, sir. So, as not delaying the session further, I would like to start. And thank you, sir, for the opportunity. So, I have divided this entire session into 5 sections. In the first section, I'm going to talk about history of English language. In the second part, I will be talking about the journey of English language in India. Third part, I'll be talking about changing the psyche behind the learning goals of English language. And fourth part, I'll be talking about basic steps how you can acquire this language as a skill. And in the fifth part, we can have a short Q&A session where you can ask whatever doubts you have. Okay. So let me begin with the history of English language. Okay. So um, if I ask you people, what do you think? What could be the history of English language? Can I get have some answers from the audience? Any guesses? How it became, like how it came in the picture on the global front, or in the England itself? Any guesses? No. All right, so I'll come straight to the point. So, English is a language which is a mixture of around 6 to 7 languages, okay, in which it combines Hebrew, Roman language, Latin, Scandinavian borrowings are also there, French borrowing, and even Sanskrit borrowings are there. For example, Sanskrit word matra becomes mother in English, bratra becomes brother in English, okay, and so on. Okay, so that's one thing. And much before in England, for example, like in 3rd and 4th century, there was no existence of this language called English language. Okay, there was more influence of Roman and Latin language, but in the 5th and 6th century, when Anglo-Saxons, a tribal community which came to England to promote trade and business in England, actually, they started establishing English as a language in England as well. Okay, so they are the ones who, we can say, brought English in England. And at that point of time, the English which was spoken over there was Old English. Okay, and then later on, the English being one of the most flexible language, it kept changing its form. Okay, so after 5th and 6th century, from 11th to 15th century, when after the Norman quest, what happened was English kind of changed its form and it became something called Middle English. And now till date as well, in short, we can say it keeps on changing its form according to the global needs, of course. And what we learn now is called modern English. So you can see from 5th century to till date, English has changed 3 forms, like Old English, Middle English, and now what we have with us is called Modern English. Okay, so that's a history of English language itself in short. Okay, now when it comes to India, how English entered Indian region.
was obviously because of East India Company. But before I begin with that, I would like to also tell you that there are different sections of countries on the globe which treat or acquire or learn English in different ways. For example, for Britain, Australia, and America and New Zealand as well, English is a first language. What I mean is it's a native language for these countries. Okay, it's a mother tongue for these countries. Whereas for countries like India, South Africa, and Singapore, English is a second language. What I mean is, we learn English as a second language. It is a link language for us, okay, which helps us to connect with the globe. And when we talk about India, it also helps us to connect in a on a domestic level. Okay, so, and then there is a third category of countries, which learns English as a foreign language. For example, countries like China, Japan, Korea. Okay, and these are the countries who are basically learning English as a foreign language just for the sake of trade and business. They keep the use of this particular language at a very minimal level, I would say. And now, coming back to the history of in English language in India. So initially, when East India Company arrived in our country, it was purely for trade and business. So there was no chance of them spreading their culture. This concept was not in their plans, we can say, according to that. But there was this one act which changed the scenario entirely. Which was a Charter Act of 1813. What happened because of this act was it kind of break the monopoly of the East India Company on trade, and the crown became more powerful. So everything was in the hand of crown, and they started controlling East India Company in our country as well. Okay, and because of this act, the East India Company started losing its power on civilians and on a public front as well in our country. So what happened was they started becoming kind of insecure, and they started feeling the need of spreading their culture at that point of time, and even crown supported this idea, and hence from the year of 1813 to 1857, they started opening up a lot of missionary schools in our country on primary, secondary, and high level as well, and even universities in few big cities, metro cities like Chennai, Kolkata, and Delhi, and so on. Okay, so from 1830, what happened was teaching of English became very effective in our country. And from 1834, there was this man who entered our country named Lord Macaulay Minute. Okay, and he was the one who introduced India with the more intensity of this English language. Okay, because he came up with the concept of Macaulay Minute. Okay, so in that minute, what he did was he first of all traveled the country when he entered India, and then he read people so well, and he realized that it was not easy to root this language in our country, and for that sake, what he did was he made this whole set of rules which are supposed to be used to kind of convince Indians to learn English. Okay, so I will read some of them in front of you. First thing he suggested to East India Company was that we need someone from Indian race only who are supposed to teach English to the other Indians so that it becomes more convincing for them. And moreover, we need a person who is like in the terms of his skin and blood, that person should be Indian.
but in terms of opinion, ideas, values, that person should be British, means the white. Okay, that was his first suggestion. Second thing, he wanted East India Company to make sure that people of India are being colonized mentally so that they are convinced completely to learn this language and give this language the highest of the importance. And that's the to do so, what he did was he suggested them to stop the printing of Arabic and Sanskrit text. That was his next extreme step, we can say. Next thing, he suggested them to open more and more schools, which was something they had already done. And apart from it, he also suggested them to make it compulsory for even for Indians to learn English if they want to enter civil services by any means. So these are the suggestions he gave to East India Company to kind of get a hold of Indians so that they can spread their language and in a way culture as well. Okay, because language doesn't come alone; it comes with a culture. So what happened after this was he left India. Lord Macaulay Minute left India in the year of 1858, and but his impact kept prevailing in our country. And from 1858 to 1947, till the time of independence, we kept on learning this language continuously and religiously. And what happened was, after 1947, there were few people who were kind of not really happy with the fact that we are going to make English as an official language, but there was a conflict. There were a set of people who wanted Hindi to become our national language, but because of some or many non-Hindi speaking states in India, we couldn't make we couldn't make Hindi as a national language, which was and which is still date a conflict in our country. And hence, what happened was after even after 1947, which means even after getting independence, we couldn't eliminate this language completely because by that time it was really synced in with our system, with our official works, with our documents, and moreover, it became lingua franca for us. What I mean is it became the link language for the entire country on global and domestic levels as well. Okay, so that was the reason. Until date, this is the reason we couldn't get rid of this particular language. But sadly, if we would have treated it just as a language, it could have been fine completely with all of us. But as a nation, what we did was eventually, with time, we made it a symbol of class, which was something and which is still date something unacceptable and problematic. And that is something this is the core problem which make this entire process of learning English language a very problematic issue. Okay, so what I would suggest is now we know the history of the English language in our country and the reason as well why we couldn't eliminate it even after independence. I would like to say, and with my experience as well, I'm saying this. See, I have taught English in 4 states by now. So I know this one thing for the fact that we really need to change the psyche behind the learning experiences of English language. For example, I have taught in 4 states by now: Bihar, Karnataka, Andhra Pradesh, and Telangana. So, what I have realized is uh, common problems are there when it comes to learners. Okay, they face something with some problems which are really common. For example, lack of vocabulary, finding the right words to express themselves, and sometimes it's also about grammatical errors, the basic grammatical errors. So we have common problems. Why so? That is something first thing. That is something which needs our attention. So that happens because we were a country which was colonized for the longest period of time, and this is a language which was kind of imposed on us. It was, and it is not our official. Sorry, it's not our native language.
It is a second language, and that is one thing we should always remember, that we are learning English language as a second language. So we need adequate amount of time to acquire this language. Okay, that's the reason I am using this word. We are not someone or who for whom it's kind of natural, and when something it's not natural, when a skill is being acquired, it takes its own fair share of time. That is something we should realize. That's first thing. Second thing is, we need to change the psyche behind the learning goals of this language, because we are putting so much pressure on our country in general, and on students in general as well, that making it a symbol of class or education. That's another problem. We need not put lot of social and educational or class related pressure on students when it comes to learning English. Okay, it should be seen just as a skill, moreover not just as a subject, I would say. Okay, why so? Okay, because coming back to my point, when something is natural, it doesn't seem really difficult. Okay, that's one thing. For example, if I ask you people, how many of you have learned one life skills just by observation? It could be anything. It could be riding a bike. It could be driving a car. It could be cooking. It could be planting. It could be anything. Any life skill which you have learned just by observation, unknowingly. Anyone over here? No one? Okay. For example, I have learned cooking just by observation. No one taught me how to cook, how to make anything, um, and I was really surprised when I could really do it on my own, and that completely came out of my observational skills. Likewise, I've seen people that when you try to inculcate or kind of sort of develop any skill in your life, which are especially life skills, it will come to you naturally. You really need to give it some time and attention and a keen observation. Okay, that's something which is really common. Okay, so hence we need to realize the fact that it is a skill which can come through observation, and it will only happen when we change the psychology behind the learning goals of this particular language. For example, again, making it natural, not making it a symbol of class or education, and seeing it just as a skill. Okay, not something which is out of the box or which is something alien to us. Okay, and with on the same time we need to mark this as a note that we need to preserve our languages too. For example, I have learned this as well with my experience, that if you want to become good at English, become good at your own language. I mean, it can be regional language or it can be Hindi as well. Okay, learn it properly, clarify your vocal cords, clear your sound, clear your power of articulation. Only then you can become good at English. That is something which is really, really important. Okay, because when you go into the linguistics part of this particular subject or a skill, as I say, it requires you to articulate a lot of sounds which are not there in the other languages, and sometimes it's there in the other language. Okay, for example, how many alphabets are there in English? Anyone who can answer? I know everyone knows it for the fact. Okay, 26 alphabets are there in English, but when we look into the sounds, how many sounds are there in English? There are 44 sounds in English. So you can imagine the blend it does have. And it is obviously because of the fact that it's a mixture of 6 to 7 languages. Okay, that's one thing. So, yes, again, coming back to my fourth point, which was the basic steps to learn how to
acquire this skill. So for that, what you need to do is you need to focus on something called LSRW pattern. Okay, listening, speaking, reading, and writing. LSRW pattern, in which L for which is standing for listening. It's a process of consumption. When you are listening something in English language, you are consuming. Means you are observing the language. As I said, you can learn few skills, especially life skills, through observations as well. So maybe anyone who would like to kind of develop their English, they can start with observation, and it can begins with any sort of area of interest of the learner. Okay, for example, if you are someone who's interested in sports, you can start hearing sports commentaries or sports related news in English. That would help you. If you are someone who is much more into entertainment, you can start watching English movies or series or short films whatsoever. If you are someone who are interested in nature, you can start watching any documentary, and that goes on and on. The list is on and on. So that is L. Now, second process of consumption is reading, which is really important, I would say. So instead of um, directly to start, speaking, okay, or writing, it would be much more easier if you start with reading, okay, and not overdoing it. Maybe just one page every day helps a lot. So just one page every day, not overdoing it, not overburdening yourself a lot. Just read one page every day, and maybe you can begin with Indian authors, which are more lucid and easy to read. For example, there are some authors which are like who write in a very basic form. Maybe the you can start with Amish Tripathi, or there are more contemporary novels, or maybe Chetan Bhagat, or even short stories of the old Indian English writers, for example, R.N. Tagore or Vivekanand, or you can start with their essays as well if you are into non-fiction. Okay. So reading is also something which will help you to find the gap, find the bridge in between where you are lacking, what you need, and it kind of help you to develop your interest again. Next step, the basic step would be finding your own vocabulary body. What I mean is, whenever you come across while reading, suppose you have started reading in order to learn English language, okay? So whenever you come across any new word in English language, what you can do is you can just write down the word, write down the meaning of the particular word, one synonym, one antonym. Synonym is a similar word, antonym is an opposite word, and then just let it be. Now it depends upon the individual's capacity. You can learn 5 words a day, or maybe you can limit it to only 2 words or even one word. Okay, but that will help you to create your own vocabulary body, which will help you to sustain when it comes to the struggle of finding out the right vocabulary to express yourselves. Okay, and if you ask me, as an author, as a professor, I'm telling you, to be honest, that everyone has their own fair or their own choices of words. Every individual does have their own favorite set of vocabulary, which they keep using again and again. And it happens in any language for that matter, in regional language, in Hindi, or it can happen in English as well. That's the reason we have this practice of using phrases, or in Hindi you can say kahawat, right? Or muhavre, okay? All of it, which makes us not only sound witty and wise, and but it also makes our conversations very interesting and kind of captivating as well. So far, any doubts? Anyone?
Anyone can ask me questions if they want to learn how to acquire this language as a skill, or why we are still sticking to this English language a lot. And I think I have clarified that point, but if any more clarification is needed, we can start with the Q&A session now, so that we can have fruitful interaction, which will be more captivating. Good evening, ma'am. Good evening, sir. No, ma'am. Oh, good evening, ma'am. Yeah. Sorry. Yeah. मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब इंग्लिश में हाँ. मेरा इच्छा है पोएम लिखने का, तो उसके लिए क्या क्या मतलब मुझे ये करना होगा? आपकी इच्छा है पोएम लिखने की इंग्लिश में ही. क्या आप ये बता सकते हैं कि आप क्यों इंग्लिश में ही लिखने की इच्छा क्यों है? अगर आप ये मुझे बताएंगे तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से हेल्प कर हिंदी में पाऊंगी. भी मैं लिखती हूँ, लेकिन इंग्लिश में मैंने एक पोएम लिखा था कुछ साल पहले, तो अच्छा. मतलब मेरी इच्छा है कि मेरा बुक में भी लिखे, और बहुत सारा, क्योंकि मैंने नॉवेल भी पढ़ा है इंग्लिश में, तो मेरा इंटरनली है कि इंग्लिश में कुछ वर्क किया जाए, हिंदी के अलावा इंग्लिश में कुछ वर्क किया जाए, तो मेरा बहुत इच्छा है. तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मेरा ठीक ठाक करना होगा जिससे कि इंग्लिश में पोएम लिख सकूं? पहली बात तो वही, आप अपना ज्यादा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए इंग्लिश ऑथर्स को. जितना ज्यादा एक अच्छा लेखक बनने के लिए एक अच्छा रीडर बनना बहुत जरूरी होता है. जब मैं भी अपना राइटिंग करियर स्टार्ट करने वाली थी, मेरे जितने भी सीनियर्स थे, जो भी प्रोफेसर्स थे, जिनसे जब भी मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, ऑल ऑफ देम, वो सारे लोगों ने मुझे यही कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ना स्टार्ट करो. और जब मैंने एक्चुअल में वो किया, आई हैव सीन द रिजल्ट्स. मैंने देखा है कि बहुत फायदा होता है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा आइडियाज पता चलते हैं, आपको ज्यादा लैंग्वेज एक्यूरेसी का मालूम पड़ता है. क्योंकि सिर्फ ग्रामर पढ़ने से होता क्या है कि आपको रूल्स तो पता चल जाएंगे, ठीक है, कि क्या क्या रूल है, कब टेंस लगाना है, कब वर्ब लगाना है, कब क्या एडजेक्टिव लगाना है, ये सब कुछ. पर लेकिन होता क्या है कि जब हम प्रैक्टिकली लैंग्वेज को यूज करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उतने रूल्स हमको याद नहीं रहते. दैट्स अ बेसिक ह्यूमन नेचर. तो उसके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें. दूसरी बात, जैसे मैंने कि कहा कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आपको खुद के कुछ चुनिंदा शब्दों की शब्दावली बनानी होगी, ताकि आप जब भी लिखने बैठ रही हैं तो आप कोई भी इमोशन जो भी आप एक्सप्रेस करना चाह रही है, खुशी हो सकता है, दुख हो सकता है, तो आप उस इमोशन को किन शब्दों में बयान करना चाह रही है, वो शब्द जो होंगे ना, वो आपके ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से और जो भी आपने शब्द सीखा और एक अपने वोकैबुलरी बॉडी जो आपने डेवलप की है, वहीं से आएंगे. तो इसके लिए ये दो काम जरूरी हैं आपके लिए. और तीसरा कि गिव अप मत कीजिए, हर दिन लिखने थोड़ी देर बैठिए, बिल्कुल अगर इच्छा मन से है लिखने की. एंड आप मुझे भी कांटेक्ट करके सर के थ्रू डीएम कर सकती हैं कुछ. आई विल आल्सो हेल्प यू इन फ्री पब्लिकेशन टू बिगिन विद, सो दैट आप का प्रोत्साहन बढ़े, आपका आत्मविश्वास आपका बढ़े. और हर दिन लिखने की कोशिश कीजिए, वो 1 लाइन हो, 2 लाइन हो, कुछ भी हो. और पढ़ने के भी हर दिन 1 पेज ही सही, पर कोशिश कीजिए. ज्यादा नहीं, आप हर दिन आधे घंटे भी देंगी अगर, तो मुझे पूरी मेरा आशा है कि आप. लिटरेचर ही थोड़ा सा वीक है, तो उसके लिए आप बोली है कि पढ़ने के लिए, तो मैं प्रयास करूंगी कि और भी थोड़ा बेहतर करूं. थैंक यू मैम, हाँ, अगर थैंक यू आप सो मच. पढ़ेंगे तो हो जाएगा. थैंक यू. या एनी मोर क्वेश्चंस? Dr. Sanand Shukla, sir, you have raised your hand. Good evening, Dr. BETKAR, sir. Good evening, ma'am. A wonderful presentation you have made. And I think when we are talking about English, we remember the British time. But yes, definitely, it has some advantages. Like we are becoming global because of this universal language. And English should be considered as a universal language. No doubt, we are having a lot of respect and love towards our mother tongue. But very important thing is, the English we could communicate European countries, USA, so many countries we can communicate.
So no doubt, English is one of the language one should know. Now my basic questions are there. Some of the schools and some of the colleges, they are having their, the language is up to the, means they are having their local languages. And all of a sudden, when the people goes to the professional courses, the English language comes. I'm a professor since last 30 years in medical college. So some of the student comes from some village, rural areas also. And the level of, learning is also different from, each students. So it becomes so difficult to adopt, with the languages. And especially when it comes to the, every subject has, even it is the English language, every subject has its own language also. Medical language is quite different. If suppose other person will read English language, it is okay. But medical language, it becomes little more difficult, for them. So this is how we have to, just a minute. Okay, so can you tell me you are from which place? I'm from Nashik, Maharashtra. Nashik, Maharashtra. So you must be getting rural area students who are from Maharashtra region. Definitely, because and so they must be vocally we are getting admissions from the DMRE, that is a state level, process is there for medical colleges, and it comes from them. So that is one of the basic problem. And second thing is, when we are talking about English language, the written language, the verbal language, the official language, I think that difference is also there. So many of the times people can write wonderfully, but they cannot communicate. So they fail in vocabulary. And third thing, I learned at one place at Delhi that once boy, he was explaining the foreigners in English. And I caught him. I said, how your English is so nice. He said, I'm doing this business since last 20 years. So this is how, he learned just because of staying with those people. And his language was really very fluent. But he could not write, but he can speak. So what do you think about these aspects? Thank you. Yeah, sure, sir. Really lovely question, first of all. So, yes, your first concern, how he learned, as I said, that for that particular boy you met in Delhi, it became natural to him because he learned it through observation. Okay, I repeat myself. It became natural to him because he learned it through observation. As I said, sir, any skill, when you learn it through observation, knowingly or unknowingly, your brain keeps on registering it. And that particular skills or the step involved in that skills is being registered in your subconscious brain, not in a conscious brain. And अगर मैं आपको इसको और clear करूं, so what happens is when you learn something consciously, you don't get the intensity of that particular learning subject or anything skill so easily. But when your brain is registering something on a subconscious level, what happens is it's a magic of human brain that it makes it natural to you and naturally you learn it. Okay, for example, our muscle memory, our reflexes, these are natural to us. For example, as I said, I learned cooking through observation. It is natural for me. A lot of boys learn riding bikes just by seeing their elder brothers or friends. It is natural to them because it is being registered in their subconscious brain. And that's a magic of our brain, and that comes because of culture as well and because of observation as well and the people around. That's why हम कहते हैं हिंदी में भी ना, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है. तो ये वही वाली बात है, पहली चीज. दूसरी चीज, आपका जो कंसर्न था कि आपके जैसे मराठी स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट है. बिल्कुल सही बात है. जैसे मैंने भी साउथ इंडिया में पढ़ाया है तो मेरे जो स्टूडेंट्स कन्नडिगा थे या तेलुगु बैकग्राउंड से थे, जो स्टेट बोर्ड से थे, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज उनको सिर्फ रीजनल लैंग्वेज आता था, उनको हिंदी भी नहीं आती थी. ओके, सो फॉर दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आई सजेस्ट दैट ऑब्जर्वेशन इज ओनली द की. ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही इस चीज को वो जितना ज्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे, लैंग्वेज को धीरे धीरे करके कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे थ्रू रीडिंग एंड लिसनिंग ऑफ कोर्स,
उतना ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट वो देख पाएंगे अपने आप में। और इसको बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहिए। क्या प्रॉब्लम क्या है कि हमने इसको दिमाग में बहुत बड़ा बना रखा है कि बहुत बड़ी बात है इंग्लिश बोलना, जानना या पढ़ना। तो उस प्रेशर के कारण भी क्या होता है, बहुत बार बच्चे डर जाते हैं एंड गलती करने से बहुत ज्यादा डरते हैं कि अगर हमने गलती की तो हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। एंड इस घबराहट के कारण सीखने की उतनी कोशिश नहीं करते जितनी करनी चाहिए। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, if you are making mistake in Marathi, if that particular student or kid is making mistake in Marathi, तो कोई उतना हंसेगा नहीं। पर वही गलती अगर इंग्लिश भाषा को, अंग्रेजी भाषा को इस्तेमाल करते वक्त अगर हो जाए तो लोग इतना मजाक उड़ाते हैं या इतना डर रहता है कि हमारा मजाक उड़ाया जाएगा या फिर हम तो लोग हंस देंगे कि आप you can't take that first step. That is something which makes things difficult for students. तो इसको हमें हमारे इंग्लिश प्रोफेसर्स या टीचर्स की जिम्मेदारी है कि हम गलती करने के लिए पहले तो इनकरेज करें बच्चों को जो स्पेशली रीजनल बैकग्राउंड से आते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप टूटी फूटी ही यूज कीजिए, पर यूज कीजिए। पहली चीज तो यही है। दूसरी बात यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व कीजिए, फिर धीरे धीरे अपनी गलतियां सुधारिए, तब ये धीरे धीरे ग्रो होगा। क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज है ना, तो इट टेक्स टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैं ईस्ट इंडियन हूँ, सो आई एम गुड एट कुकिंग द डिशेज आई एम मेकिंग हियर, बट इफ यू आस्क मी टू मेक एनी मराठी डिश or any Punjabi dish for that, I can't do it. Even though I'm good at cooking, I can't do it. I will need some time to learn it and then do it, right? So it's the same thing, right? That English is not our first language. We are acquiring it, we are learning it, so it will take its fair share of time. तो वो वक्त देना चाहिए हमको, वो टाइम देना पड़ेगा। Thank you, Dr. Sir. Yeah. Yes, sir. I want to just make a last comment. I think we should not make English as a status symbol. I have seen some people. It shouldn't be a symbol of education or class, for that matter. As I said in my presentation as well. It is just the media. It is a language of communication. It is a media of communication. Yes. That is what we should consider. Some people, deliberately try to speak English and they are making mistakes. I think they should learn thorough English, at least some words, few words, good words, sentences, and they should speak, rather than talking something else. They want to show their status symbol by just saying some words. Yeah. So thank you very much, madam. Wonderful presentation you have made today. And no doubt, everybody should know English. And why not? We should have knowledge of 3 to 4 languages. So I think the learning process is never, ever ending, I should say. In Indian schools nowadays, in fact, French and other foreign languages, German, Spanish, are also being introduced in Indian schools, which is really incredible. In the world, only 40% people talk English or they communicate in English. Because if you start from Japan, they are having Japanese, Chinese, you'll find they learn even it in as a foreign language. Thailand also, they are having their own language. Malaysia, Singapore, Hong Kong. If you'll go to the, Pakistan is just like us. And then you'll go to Saudi or some other UAE countries, they are having their Arabic and so on. So only European countries, USA, and some communities. Not even the entire Europe, sir. Because, for example, even France, French people don't speak English. They never do it. They have boycotted it long back. Talking English, they feel insulted, French people, they feel insulted that why you're talking this foreign language to us. So I think 40% is there. No doubt it is one of the language, just a way of communication. So just like our Marathi, Hindi, Bhojpuri, we are having this language. And no doubt what you said very correctly, keep reading books and collect your, kind of a dictionary, or collect your, what we can say, words, different words. And I think the English will become wonderful. So thank you very much, ma'am. Thank you, Dr. BETKAR, sir, for giving me this opportunity to comment on this. Thank you. थैंक यू सर। मैंने मेरी 11th क्लास में बायोलॉजी ली थी और वो बड़े बड़े शब्द रहते वो देख के मैं छोड़ दिया सर। 1 साल घर पे बैठा और बाद में टेक्निकल साइड लिया, मैथ्स को मैं ये करता।
तो ये आप बहुत मेडिकल फील्ड के बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी के इतने लंबे शब्द रहते हैं कि बच्चे डर जाते हैं। अभी मैडम बोले ना थोड़ी देर के पहले कि बच्चे डरते हैं, तो ऐसा होता है। तो मैं टेक्निकल साइड पर आ गया। महाराष्ट्र में जलगांव में एक पब्लिकेशन हाउस है, प्रीतम पब्लिकेशन, वहां से मेरी एक पब्लिकेशन भी है फॉर मेडिकल लाइन स्टूडेंट्स ओनली। एक्चुअली दैट इज पब्लिश्ड अंडर द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। दैट बुक इज फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मुझे पता है, क्योंकि मुझे जब उनका सिलेबस मिला था डिजाइन करने के लिए बुक, तो आई कुड सी कि देयर आर लॉट ऑफ मेडिकल टर्म्स विच आर डिफिकल्ट फॉर देम। एंड ये सिर्फ मेडिकल में नहीं, आप लॉ में अगर जाएंगे तो लॉ में अभी भी लैटिन वर्ड्स बहुत सारे हैं, तो वो भी काफी कठिन लगते हैं स्टूडेंट्स को। Dr. Betkar sir has gone with mathematics. I think mathematics are having its own language, English language. So I think we are having different languages. If you'll go, and I think the student has to pick up those languages rather than just English grammatical and verb. I think if they can become a master in medical professional language, I think that is okay. Yeah. Thank you. थैंक यू डॉक्टर सर। जयवीर सिंह जी वेट कर रहे हैं। जयवीर सिंह जी, आप कहना चाहते हैं कुछ? जी सभी को नमस्ते। नमस्ते मैडम। मेरा सवाल है कि हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, समूह भाषाएं हैं, मतलब 12 कोश पर भाषाएं हैं, और जैसे महाराष्ट्र में कोंकण में जाए तो कोंकणी है, मराठी है। तो एक बच्चा जब अपनी भाषाओं में पढ़ता है वो बेटर है या अंग्रेजी माध्यम में ज्ञान प्राप्त करता है वो बेटर है? इन दोनों में कौन सा बेटर है? अंग्रेजी क्या एक अध्ययन भाषा है या संपर्क भाषा है? सर, पढ़ना तो अपनी भाषा में ही बेटर है, क्योंकि अब मैं ये नहीं कह सकती कि हर बच्चा भारत देश में प्राइवेट स्कूल हर माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते तो सब वही जाए अंग्रेजी पढ़े, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। पढ़े अपनी भाषा में पढ़े, पर जैसा कि मैंने कहा कि अंग्रेजी जबान जो ये है इसको एक विषय के तौर पे ना देखते हुए एक स्किल, एक कला के रूप में देखते हुए आगे बढ़ के सीखना जरूरी है। ये बात है। जैसे आप दूसरी चीजें सीखते हैं ना जीवन में, जैसे कि मैंने कहा पाक कला हो गई या योगा हो गया या कुछ वाहन चलाना ही है, तो ये सब हम क्यों सीखते हैं? जीवन में सर्वाइव करने के लिए सीखते हैं। जीवन के एक संघर्ष जो हो गया इसको कम करने के लिए, हमारी सुविधा बढ़ाने के लिए सीखते हैं। उसी तरह अंग्रेजी भाषा में आप ज्ञान प्राप्त करें, अर्जित करें या नहीं करें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अंग्रेजी भाषा को एक समय के बाद आपको अपने आप को दुनिया के सामने रखने के लिए सीखना जरूरी हो जाता है। ये एक ऐसी बात है जो मैंने इतने सालों में कहीं ना कहीं ऑब्जर्व की है। क्योंकि अब सपोज मैंने लास्ट 4 सालों से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है, विशाखापट्टनम में और हैदराबाद। वहां पर क्या था कि बहुत सारे मेधावी छात्र ऐसे भी थे जो अपने स्टार्टअप आइडियाज हो या इंक्यूबेशन लेवल पे ही हो, मतलब स्टार्टअप आइडियाज है कुछ भी है वो लाते हैं। और ऑफ कोर्स वो सारे बच्चे तो अर्बन बैकग्राउंड से नहीं थे, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स रूरल बैकग्राउंड से थे, तो वो ग्रामीण प्रवेश से आते थे, तो उनका हाथ तंग था अंग्रेजी भाषा में। पर उनको जरूरत थी इस भाषा को सीखने की ताकि वो अपने जो भी आइडियाज हैं, जो भी बिजनेस आइडियाज हो या इन जनरल भी कुछ भी अपने आप को अगर वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, भाव या कुछ भी विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए अंग्रेजी भाषा का होना जरूरी था। तो कोई अगर डॉक्टर बन रहा है या इंजीनियर बन रहा है 10th 12th तक स्टेट बोर्ड से पढ़ के उसने आगे उस पर्टिकुलर फील्ड में जा रहा है तो जाए, वो सही है, पर धीरे धीरे इसको एक स्किल की तरह डेवलप कर लेना चाहिए। इसलिए मैं सब्जेक्ट नहीं, इसको एक स्किल बनाने पे ज्यादा जोर दे रही हूँ। अब जैसे कोई भी बच्चा कक्षा 5वीं या 4थी से ही तो गाड़ी चलाना या खाना पकाना नहीं सीखता है, आगे आगे जाके आपको जैसे जरूरत महसूस होती है आप चीजें जीवन में सीखते हैं। ये उस तरह से होना चाहिए, ना कि पूरा ज्ञान अर्जित करना इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जरूरी नहीं है। मैडम दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अंग्रेजी माध्यम से बच्चा पढ़ता है
और एक अपनी मातृभाषा के माध्यम से, इनमें मस्तिष्क में कौन सी भाषा से उसकी वृद्धि अच्छी होती है? क्या इसके बारे में आप, जैसे अभी नागरी लिपि वालों ने एक सर्वे किया था, उन्होंने बोला है कि नागरी लिपि पढ़ने वाले बच्चों की याददाश्त बढ़ी है और अंग्रेजी माध्यम वालों की कम देखी गई है। तो क्या आप भी ऐसा कुछ देखती हैं बच्चों में? नहीं, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। वो ना पेडागोजी इज अ डिफरेंट सेक्शन सर। वो छात्रों की मेंटल हेल्थ, उनकी अपब्रिंगिंग, जब वो पढ़ रहे हैं तो घर में माहौल का कैसा है, इन सब चीजों पे उनकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करती है, ना कि भाषा पे, क्योंकि भाषा सिर्फ एक माध्यम है। ठीक है, कभी कभी मैंने ऐसे भी देखा है कि जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं उनकी अंग्रेजी बहुत खराब होती है, पर कभी कभी कोई बच्चे जो स्टेट बोर्ड से हैं, जो कि मेरे भी क्षेत्र से मैंने देखा है, जिन मतलब बिहार से, जहां से एक स्टीरियोटाइप है कि यहाँ के लोग अंग्रेजी अच्छी नहीं जानते होंगे, पर यहाँ जब मैंने पढ़ाया तब मैंने देखा कि यहाँ के जो स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर गुड ऑब्जर्वेशनल स्किल्स एंड हार्ड वर्क, दे वर गुड एट इंग्लिश। उनकी भाषा अच्छी थी क्योंकि उन्होंने मेहनत की। तो आप ज्ञान किस माध्यम से ले रहे हैं वो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप बच्चे की ऑब्जर्वेशनल स्किल कितनी अच्छी है, उसकी क्रिएटिव लिबर्टी कितनी है, टीचर्स कितना इनकरेजिंग है, इन सारी बातों पर एक बच्चे का मेधावी होना निर्भर करता है, और या फिर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा होना निर्भर करता है। जी धन्यवाद मैडम। थैंक यू मैडम, वन मोर थिंग, इंग्लिश टू हिंदी करना भी बहुत मुश्किल है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, आई वाज गिविंग पैन इंडिया माय सेमिनार्स ऑनलाइन, एंड मुझे बोलना था बिहार में, तो म्यूकस मेम्ब्रेन इज अ वर्ड, म्यूकस मेम्ब्रेन। देन आई सर्च फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन, तो श्लेष्मा झिल्ली आकर के वर्ड मिला। मैं बोला अगर मैं श्लेष्मा झिल्लिया बोलूंगा तो किसको पता चलेगा? तो देयर आर सम प्रॉब्लम्स आल्सो। So I think we are using this happens with the very disciplinary जो टर्म होते हैं ना सर, उसमें ये दिक्कत आती है। ये मैंने जैसे आपको कहा ना कि लॉ फील्ड में भी हो, चाहे मेडिकल में भी हो, चाहे इंजीनियरिंग में भी हो, जो उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए डेडिकेटेड टर्म्स है ना, उसके लिए एक हिंदी शब्द ऐसा ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है, और अगर आप ढूंढ भी लें तो वो आम भाषा में यूज नहीं किया जाता, इसलिए इंसान फिर वो प्रेजेंटेशन देते वक्त या स्पीच देते वक्त यूज नहीं कर सकता है। और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको आपको हो रही है, ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स को भी हुआ था। जब वो हिंदी टू इंग्लिश भी ट्रांसलेट कर रहे थे, या हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी जो भी कह लीजिए, तो कुछ शब्द ऐसे थे जो उन्होंने भी एज इट इज ही डाल दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जंगल को जंगल ही रहने दिया गया, कर्मा को कर्मा ही रहने दिया गया, उन्होंने भी ज्यादा ट्रांसलेट नहीं किया है। दैट्स हियर लाइक आवर इंग्लिश कम्स फ्रॉम। तो we are using too many English words in day-to-day talking also. We are using so many words, table ही बोलते हैं हम, मेज नहीं बोलते हैं, टेबल ही बोलते हैं। तो I think that mixture is always there, English and Hindi and English and local language. और वो हमारी कंट्री को लेके रहेगा भी सर, बिकॉज वी वर कॉलोनाइज्ड। हम बहुत लंबे समय के लिए गुलाम देश थे, और हम पे ये भाषा थोपी गई है, हमारे में नेचुरली था नहीं। तो जब भी कोई ऐसा, जब कहीं का कल्चर कहीं के एक सेट ऑफ पीपल लेकर आते हैं ना, तो वो छाप रह जाती है। जैसे आप आज भी अगर हैदराबाद जाएंगे तो आपको निजामी और ईरानियन इन्फ्लुएंस दिखेगा, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो कुछ हद तक पहनावा भी हो, या इमारतें हो, वो ना रह जाता है कल्चर में। एंड कल्चर एंड लैंग्वेज व्हाट वर्क्स और वर्क्स हैंड इन हैंड। We are using उसी का नतीजा है, and we call it as a post-colonial effect. Yeah, even we are using some Greek word, Hebrew word, and Persian words in our language. Even Urdu alphabet we are using, है ना? So I think we are having nowadays mixture of languages. Yes, everyone is realizing or unrealizingly, like we are multilingual in one or the other way, if you see it that way.
इनफैक्ट अंग्रेजों के लिए भी बाइबल भी जो है वो मिक्सचर है। बाइबल जो ओरिजिनल बाइबल था वो लिखा हुआ था हिब्रू एंड लैटिन में, उसको बाद में ट्रांसलेट किया गया है। The final version of translated Bible was published in 1411, okay, in the reign of King James first. And even we are going with some ancient books, you know. Sorry, sir. Latin American words are there, you know, the like what Winston Churchill said, you know, the farther we say, farther, you know, we can go. So that we are using some terminologies of Latin English also. Thank you. Yeah. Yes. थैंक यू सर, थैंक यू जयवीर सिंह जी, थैंक यू कृति कुमारी मैडम। और एक मंजुला मैडम ने मैसेज दिया था कि पूछना है बोल के। मंजुला मैडम है आप? ठीक है, थैंक यू इन सभी को। और मेरा एक अनुभव है मैडम, मैं गुजरात में गया था तो वहाँ का साइंस 12th जो है वो इंग्लिश में रहता, गुजराती में रहता है, हमारे पास इंग्लिश में। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो कोशकार है, एक जो शब्द का पैरेलल बनाने वाले, वो इतने रिच होना कि उन्होंने हर शब्द का पर्याय शब्द बनाना है। बनाने के बाद वो जैसा अभी सर बोल रहे थे कि वो शब्द ऐसा उच्चार करना पड़ता है कि वो नॉर्मल लोग नहीं समझ में आते। तो ये सब होने से मेरी ऐसी कहनी है कि मातृभाषा चलो अपना बचपन उसमें है, हम अपना लोकल का जो कुछ करना है कर सकते, मगर जब कंप्यूटर टेक्निकल साइंटिफिक युग में जाना है तो कोई लैंग्वेज काम में नहीं आती, कोई लैंग्वेज, क्योंकि उसके वर्ड्स नहीं थे और वो वर्ड वहां नहीं मिलते। कोई मेडिकल का बच्चा अपना मराठी हिंदी में बुक पढ़ के मेडिकल नहीं बन सकता, क्योंकि उसके वर्ड का पैरेलल शब्द इधर नहीं है तो भी वो प्रोनाउंसिएशन समझ में बहुत मुश्किल आता है। तो आज के जमाने में आप जो स्किल बोल रहे, स्किल नहीं कंपल्सरी है मैडम, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश की नॉलेज लेना, क्योंकि टेक्निकल पूरा लिटरेचर उसमें है। क्या करते हैं हमारे फिर आपको इसीलिए मैंने स्किल कहा सर, क्योंकि आपको ना, अब जैसे आपको अगर गाड़ी ना चलाने आए तो आपको जीवन भर एक ड्राइवर रखना, आपको डिपेंड होना पड़ेगा, है ना। जैसे कि कंट्रीज लाइक जापान और चाइना, वो इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वो क्या है, डिपेंडेंट है, हमेशा ट्रांसलेटर्स उनको हायर करना है, रखना है। इसीलिए ये एक स्किल है जो अनअवॉइडेबल है, जो कि कंपलसरी है, स्पेशली हमारे लिए, क्योंकि हम एक गुलाम देश थे और हमारे पे पोस्ट कॉलोनियल इफेक्ट है। हम पूरा का पूरा इसको पकड़ भी नहीं सकते अपने लैंग्वेजेस को छोड़ के, एंड पूरा का पूरा छोड़ भी नहीं सकते। अगर हमको टेक्निकल फील्ड में जाना नहीं है, घर पे बैठना है, तो अपनी मातृभाषा में एंजॉय करो, क्योंकि बाहर का नॉलेज नहीं है अपनी भाषा में। क्या करते इंग्लिश के कुठले कोणते सॉफ्टवेयर जो मराठी में बनते हैं, जो इंग्लिश के कुठले टेक्निकल वर्ड है कौन से नहीं बनते हो, क्योंकि हमारे लोग बनाने वाले उसके पैरेलल वर्ड नहीं बनाए, और नहीं बनाए तो भी इतने हार्ड बनाए कि वो समझ में नहीं आते। अगर उसको पांचवी के बाद अगर उसको 5th के बाद भी अगर साइंस पढ़ना है तो उसको इंग्लिश आना कंपल्सरी, क्योंकि आगे पूरा साइंस का नॉलेज इंग्लिश में, अपनी कोई भाषा उसमें काम में नहीं आती, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि आगे जाना है तो लिंगी, क्योंकि जो लैंग्वेज में पूरा करियर है लोगों का, जो लैंग्वेज में टेक्निकल साइड है, जो लैंग्वेज में आज पूरे वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर बन रहे, जो लैंग्वेज आज हर एडवांस टेक्नोलॉजी में यूज में होती है, उसको विरोध करके क्या मिलेगा। उसको तो पहले से कंपल्सरी करना चाहिए, मातृभाषा पढ़ो, कोई बात नहीं, वो भी मातृभाषा। अभी भी जो विरोध कर रहे हैं ये एक समझदारी वाला डिसीजन नहीं है, बिकॉज हम बहुत पहले ही इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट कर चुके हैं। तो अब विरोध करने के लिए ये बहुत मतलब विरोध क्यों करना है उसको? अगर आपको साइंस पढ़ना है, टेक्नोलॉजी पढ़ना है, सॉफ्टवेयर पढ़ना है, कोई आगे की तरक्की करना है, तो आपके पास वर्ड ही नहीं है ना वो लैंग्वेज की, ना वो लैंग्वेज कंप्यूटर समझ सकता है, तो विरोध करके क्या? विरोध अपनी भाषा, अपना रिच कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपना लिटरेचर हमें समझ में आने के लिए, हमारे साथ लोगों के कम्युनिकेशन करने के लिए अपनी भाषा ठीक है। इंग्लिश को विरोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें पूरा भंडार है ज्ञान का। वहां बहुत इंटरेस्टिंगली मैं आपकी इस बात पे मुझे याद आ रहा है, मैं एक चीज बताना चाहूंगी। पहले रविन्द्रनाथ टैगोर भी बहुत बड़े विरोधी थे अंग्रेजी भाषा के, पर फिर वो WB ईस्ट से मिले और तब उन्होंने गीतांजलि लिख दी थी या लिखना शुरू किया था, जहां तक मुझे याद है। और WB ईस्ट से मिलने के बाद उनको समझ में आया कि अगर भारत को अपने आप को एक ग्लोबल फ्रंट पे और एक एक्सप्रेस करना है,
अपनी कहानी सुनानी है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, भारतीयों के लिए और भारतीय लेखकों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करें और अंग्रेजी भाषा में लिखें, ताकि हिस्ट्री डिस्टॉर्टेड ना हो। और तब उन्होंने अपने लेखन जो थे उसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और उन्होंने अपने गीतांजलि का जो परिचय है वो कहीं ना कहीं WBE से लिखवाया, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। बिल्कुल सही। मातृभाषा यानी कि हमारे जन्म से जो कान पड़ती है वो भाषा। इंग्लिश भी अभी भी आप अगर ब्रिटेन में जाके अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो चौरी चौरा इंसिडेंट जो हमारे देश में होता उसका उन्होंने कुछ अलग ही लिख रखा है। तो उस चीज को कम से कम सही रूप से व्यक्त करने के लिए दुनिया के सामने हमें अपनी हिस्ट्री खुद लिखनी पड़ी। एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स आर आल्सो रिक्वायर्ड। चलिए हम रीराइट करें हिस्ट्री को। हेलो मैडम। वो चीज है मैडम। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि इंग्लिश में खुद नहीं लिखा है, तो दूसरे से ट्रांसलेशन करवाया क्या है? नहीं, लिखा उन्होंने ही है। उसका इंट्रोडक्शन WBE ने लिखा था। अच्छा, थैंक यू मैडम। लिखा उन्होंने, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट WBE से है, और जहाँ पे उनकी WBE से बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। इनफैक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर से ही मिलने के बाद ईस्ट ने भी बोला था कि मैं कभी भी नहीं जान पाता कि भारत क्या है अगर मैं RN टैगोर जी से नहीं मिलता। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। अपनी भाषा का हमें आदर सम्मान है, फिर भी आगे चलने के लिए इंग्लिश कंपलसरी है, क्योंकि हर पॉइंट पे इंग्लिश है। वो बच्चों को जन्म से ही इंग्लिश का देना चाहिए, मातृभाषा भी देना चाहिए और इंग्लिश भी देना चाहिए। आगे चल के उसको साइंस में अगर कहीं तरक्की करना है तो इंग्लिश आना कंपलसरी है। थैंक यू। और आज का जो आपका सेशन रहा वो हमारे इंग्लिश के टीचर्स को मैं शेयर करूंगा, क्योंकि उसके लिए जो करियर कोर्सेस है, स्किल कैसे इंग्लिश की यूज करना है, वो लोग उसका यूज करेंगे। थैंक यू मैम। इट वाज वेरी लेट बिकॉज थोड़ा लेट होते होते बहुत लेट हो गया आपके स्पीच को। तो कोई बात नहीं, आज हमें जरूरत भी थी तो आपने एक्सेप्ट किया। थैंक यू। भविष्य में भी आपके लिए हमारा ये वेबिनार निमंत्रित करेगा आपको। थैंक यू मैम। Thank you, sir. Thank you so much for the opportunity.